आयुर्वेदा क्या है? It's a way of living, a way of lifestyle, not just a medicine. लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं आयुर्वेदा को लेकर, आप क्या कहना चाहती हैं? The moment I say Ayurveda, they are like, अरे नानी के नुस्खे है भाई. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Nazia, your host for Ilm Circle, initiated by MS English House. Today we have a very special and young guest with us, that is Miss Sania, who is a student of Ayurveda, जो कि अपने सपनों की उड़ान को भर रही हैं. तो चलिए हम उनको वेलकम करते हैं. वेलकम मिस सानिया टू द शो. Thank you so much, ma'am. ओके, तो मिस सानिया, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकती हैं? जी बिल्कुल. So yes, hi everyone. This is B.H. Sania Kausar, a first year professional BAMS student. Honestly, if you would have asked me this question years ago, कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो basically I would never have imagined myself in the field of Ayurveda. But मैं यहाँ हूँ and I am blessed to be a part of this journey. So yes, once NEET got completed, I did not get MBBS basically. Let's be frank enough, okay? So I had to choose between Ayurveda and other medical courses. तो जो चीज़ मेरे को like drive करी towards the Ayurveda is the thing of prevention. Basically, other medical sciences हमें क्या provide करते हैं? They provide the curative aspect. But no one focus on कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बीमारी आने से पहले we are free enough कि what the preventive measures we do take. So that is where Ayurveda called out to me. So that is the reason I am today a student of Ayurveda. Okay, that's great. मिस सानिया, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं आयुर्वेदा को इन योर टर्म्स? अपने टर्म्स में आयुर्वेदा क्या है? Yeah, sure. So Ayurveda is basically 5,000-year-old system of medicine of India, which basically is about a balance, a living with harmony with the nature. It's about not just a medicine, it's about a way of living. The way you have the regimen, that is the time you wake up till the time you sleep. What the things you need to do, in a way you need to do, then the seasonal variations, the way you sync with the nature, the seasonal variations, what you have to adapt the things according to the nature is all about Ayurveda. Ayurveda is a way of living, a way of lifestyle, not just a medicine. So, yes. Okay. So आपने कहा आयुर्वेदा फ्रॉम लिविंग टिल द एंड. ओके. सो कुछ लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं आयुर्वेदा को लेकर, आप क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में? This is seriously a very funny question. I don't know what stereotype the people have. The moment I say Ayurveda, they are like, अरे नानी के नुस्खे है भाई, अदरक वाली चाय and क्या बोलते हैं वो, हल्दी वाला दूध. लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब आयुर्वेदा का खुद के अपने प्रिंसिपल्स है, प्रूव्ड थियोरीज है, उसके खुद का डायग्नोसिस है, उसके खुद के ट्रीटमेंट चीज़ें हैं. सो ऑल अबाउट लाइक उसका खुद का है. एंड दिस आई डोंट नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी टिल डेट पीपल डू हैव, दैट दे थिंक ये बस घर के नुस्खे हैं. नो. सेकंड थिंग इज people are like Ayurveda is too slow and not at all effective. See, basically when I do speak about its process, of course for sure it is slow, but not in every case. देखो, अगर मैं बात करूँ अपने minor cases like indigestion या फिर stress, it is really quick. But when do I speak about major cases like cancer, of course it will take time. Why does it take time? It usually takes time because ये symptomatic relief provide नहीं करता. Ayurveda is all about curing the disease from the root. It's not about like other sciences which just gives you symptomatic relief. नहीं. तो this is the reason it takes time. And when it is about effective or not, it is only when you will start following it. जब तक मैं बोलूँ, जब तक आप सुनो, you will not see the results. Once you start adapting it, is where you will find okay ये effective है. Okay, all right. So what practical Ayurvedic tips would you like to give our young generation? Okay,
practical to tips. stay, to stay healthy Yeah. and safe? See, basically for the young generation is nothing but it means all the students, that is including me. When it comes, so I personally do believe, as Ayurveda says, waking up early in the morning, that is basically termed as Brahmi Muhurta in the Ayurveda. It is about 90 minutes prior to the sunrise is where you need to get up. देखो हमने ये नॉर्मली सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. द मॉर्निंग टाइम पे हम जब उठते हैं, या फिर स्टूडेंट्स है अगर वो पढ़ाई करते हैं, या फिर कोई बड़े लोग हैं तो अपना काम करते हैं, वी आर सो एनर्जेटिक, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन बहुत फास्ट काम करता है और चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करने की पावर रखता है. तो बेसिकली waking up early in the morning is a thing I advise. And then the second thing is food choice. This like patya ahara, satvika ahara is what we need to intake. देखो, I don't tell you कि see, and this modern life, of course, for the hostelites, okay, hostelites like us, it's very hard कि आप एक सात्विक आहारा को प्रेफर करो, because most of the time मेस में खाना अच्छा नहीं बनता and we are like rushing towards the junk food. I don't tell you to completely eradicate that from your life, no. At least दोपहर में instead of having the chips, you can replace it with dal chawal. And having packets of namkeen, you can replace it with soaked almonds, like basic things, because no, these small things will lead to great impacts in your health. So these things I do advise. And yeah, most important is sleep. Sleep is considered very important in Ayurveda. It is like sleep is as important as food. So stop late night scrolling. देखो, अभी मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया कम्प्लीटली, नो, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, बट सेट टाइम लाइन कि भाई मेरे को 10:30 के अंदर सो जाना है, 11 o'clock के अंदर सो जाना है. सो स्टॉप लेट नाइट स्क्रोलिंग, हैव अ प्रॉपर स्लीप, हैव अ प्रॉपर डाइट, फॉलो प्रॉपर रेजिम. आप मॉडर्न लाइफस्टाइल डिमांड्स एंड आयुर्वेदा को कैसे बैलेंस करते हैं? Yeah, this is something very interesting and everyone needs to know this. देखो, we live in a life where we are full of deadlines, late night studies, coffee, junk food and everything. अभी देखो, ऐसे में अब हम क्या समझते हैं कि आयुर्वेदा बोलता है पत्या आहारा फॉलो करो, प्रॉपर रेजिमेंट फॉलो करो, प्रॉपर डाइट फॉलो करो. ऐसा लगता है इंसान को भाई कि किसी कैद में आ गए. बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आयुर्वेदा डजंट फोर्स यू, इट आस्क्स यू टू लिव इन बैलेंस. अभी कोई तुम्हें नहीं बोल रहा है कि कॉफ़ी पूरा छोड़ दो, भाई नहीं, कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रात में आप पढ़ रहे हो, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ द रीज़न यू आर कंज्यूमिंग कॉफ़ी, बट डू नॉट ओवर डोज इट. एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन इन अ बैलेंस. See, when I do speak about following Ayurveda in the modern lifestyle, don't consider it as a barrier. No, आराम से you can follow this. But the things are like, of course, not everything, but at least something. Because seriously, as I told you before also, that small constant efforts will have literally a great impact on your health. Because every day you're doing the same thing. See, every person, if he is an alcohol drinker, if he does the same thing, repeats it for every day, then that will lead to very huge diseases like cirrhosis and all. लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो डेली नहीं पिएगा तो he will not get the disease, of course he will, but मरने के चांसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं if he continues it for every day. The thing is कि you have it, not an issue, but balance it. When you are having coffee, then balance it with adequate amount of water. When you are drinking soft drinks, instead of that, replace it with milk. So this is what, there is a requirement of balance when it comes to balancing Ayurveda and the modern lifestyle. Of course, you cannot eradicate things like कॉफ़ी को नहीं छोड़ सकते, आप अपना जंक फूड नहीं छोड़ सकते, हाँ, लेकिन उसको थोड़ी क्वांटिटी में खाओ और उसको बैलेंस रखो. बैलेंस इज द की. Okay. So, how do you stay motivated when things get tough? Okay, when things get tough, staying motivated is literally a great thing in myself, because अगर आप, because I don't know how many of you know, but I am also a content creator. Recently I have started my Instagram account where I do post like videos which make Ayurveda simple, like people, common people को भी समझ आए
कि ये वाता पित्त कफा बस नाम के दोषाज नहीं है, ये बॉडी में क्या काम करते हैं. सो आई हैव स्टार्टेड दैट डूइंग. नाउ व्हेन स्टडीज़ आर ओवरवेलमिंग, अभी मेरे को ऐसा रहता है कि आई नीड टू पोस्ट अ वीडियो टुडे, लेकिन वो एट टाइम्स नहीं हो पाता और कंसिस्टेंसी उस टाइम पे ब्रेक हो जाती है. ऐसा लगता है कि भाई सोचा था कि इस वीक में 2 वीडियोस पोस्ट करेंगे एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर असाइनमेंट दिया था वो कंप्लीट नहीं हुआ. सी, आई एम अ पर्सन जो पूरी रात बैठ के पूरी बुक नहीं पढ़ेगा. आई एम अ पर्सन जो हर दिन 2-2 पेज पढ़ेगा, और ऐसा पढ़ूंगी मैं कि दैट विल बी ऑन द टॉप. आप मेरे को कभी भी उठा के पूछ लो भाई, आई विल बी रेडी विद द आंसर, बट ओनली 2 pages एवरी डे. So this small constant efforts keep me going. And the second thing which I use as a tool for staying motivated is keeping myself in peace. This is very important. Whether it's a thing, whether it's a person, whether it's whatever it is which is disturbing me, I pick myself out from that situation. I don't allow them to overwhelm me. No, this is my life. Like seriously, the things which will motivate me are only allowed to be here. The things which are disturbing my inner peace, no, you're not allowed here. So these small constant efforts and taking care of myself basically is what helps me stay motivated in my life. Okay. It was great talking to you, Sania. Thank you for being here. Thank you so much, ma'am.